Okay, okay, wonderful. Okay, so first of all, congratulations to all of you who have been selected, for the interview stage. And this is the thing that I wanted to tell you guys: कि interview stage is very critical stage, because irrespective of your mains marks, if you perform well in interview, you will get selected. If you does not perform well in your interview, you will not get selected. And trust me when I'm saying this. And it is because they wanted to identify good aspirants as per their criteria in the interview stage. That's why they kept they increased the interview marks to 75 from earlier 50. Okay, so there is a reason for it. If they like you, they will give you marks in the range of 73, 74. And if they do not like you, they will give you marks in the range of 25, 20, and sometimes even 3 also. Because we have seen various cases of students receiving this much amount of marks and receiving this much amount of marks. So, I would suggest all of you guys to prepare very well for interview stage, because this is very critical. Because if you do well, you will get this much amount of score and your selection is practically guaranteed. ठीक है, irrespective of whether you clear the mains cut off just by few margins only, उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, फिर आपके मेंस में नंबर चाहे एकदम कट ऑफ पर ही क्यों ना हो, तो उससे आपको ज़्यादा कुछ मतलब वाली बात है नहीं. यू विल ईजिली गेट सिलेक्टेड इफ योर marks in the interview comes somewhere in this range. So I would suggest each and every one of you to be, very serious with respect to interview preparation. Do not take it very lightly. Highly important this stage is. Is this clear to each and every one of you? ठीक है, अब बात करते हैं हाउ डू यू फिल दिस बायोडेटा. सी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एनीवेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, and you've seen many videos on the internet regarding this. I'll just give you a brief idea about how do you need to approach this biodata. Just affix your passport size photo. In the post applied for, mention RBI grade B 2025. Mention your roll number over here. In the medium of interview, you can write English, write complete English, okay, or Hindi. Write your name over here. Then it's very critical that you mention about your address, permanent address, nearby railway station. All these things are self-explanatory. You do not need to do anything. Just whatever you are mentioning, just tick over here, write the name. Then you can mention about occupation, whether it's a public service, private service, whatever the case may be. Okay, select your category and mention about all these things. Nothing to be explained so much over here. Now this is very important, because now they are asking you your academic, technical, professional qualification details, and basically it's like your education background. So on the basis of chronology, go chronological wise. Mention your 10th standard, 12th standard, your graduation, post graduation, or anything extra if you have, do mention it over here. School, from which school you have done this, or which college you have done this. Year of passing, they are asking you. For example, if you have passed in, let's say 2015 or 2016, mention it accordingly. In the board, basically you have to mention CBSE if you're done CBSE, or ICSE, depending upon which board the school is affiliated to. In the graduation, it depends upon whether if your university is deemed university, then the name of the college will again come over here. And if it is under some kind of central university, so you write that university's name over here. Okay, so this is that thing. In the main subject, it's very critical that you write all the 5 subjects that you have taken in 10th as well as in 12th. Graduation mein, you can just write, if you've done BTech, you can write mechanical engineering or civil engineering, whatever your engineering branch was, same over here.
number of attempts made, basically, after how many attempts you were able to clear all these examinations. And since you must be able to clear these examination in the first attempt itself, right, one only. And in this particular section, be very clear, especially in this section. Okay, why I'm saying, because this obviously will be checked over there, and if any discrepancy will be found, they'll ask you to first of all, they'll create some issues, and then you do not want to get rattled at the interview stage. तो ऐसा नहीं चाहते कि आपकी इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं और वहाँ पर फिर आपको पता लग रहा है कि ये मार्क्स में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, एंड देन you are much more concerned about whether you will be able to give interview or not. And so make sure that whatever your mark sheets are, and you write exact percentage of marks. So for example, in case of your, let's say 10th, if it's a grade point, so write your grade point into 9.5, because this is what the criteria is. यहाँ पर तो परसेंटेज मिलता ही है. कॉलेज में आपका जो CGPA रहता है, उसका एक बार कॉलेज से पूछ लेना कि किस पॉइंटर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, वेदर इट्स अ 10 और वेदर इट्स अ 9 और वेदर इट्स अ 9.5. तो यू कंफर्म इट फ्रॉम द कॉलेज एंड देन यू राइट इट अकॉर्डिंगली. तो परसेंटेज, मेक श्योर दैट यू गाइज राइट परसेंटेज वेरी क्लियरली एंड इन वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल बी चेक्ड ओवर देयर. ठीक है, आपका जो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के पहले ही हो जाएगा. तो इस चीज में बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग. ओके, नेक्स्ट थिंग. नाउ this 10A section, in which they are asking you particulars of very high academic or professional qualification as well as experience of value to the bank basically Reserve Bank. Okay, so here I would want you guys to write any certifications that you have gotten from IIBF or any reputed institutions like NSE or let's say BSc. If you have secured any kind of certificate courses from all of these things, that obviously is related to whatever the RBI is doing. ये नहीं कि आप you are writing about, let's say, public administration certificate in this particular section. It's no point. Okay, so whatever certificate that you are writing over here, it must align with whatever Reserve Bank of India is doing. Okay, it is very critical. It must align with RBI and its functioning, or at least somewhat related to it. Not any kind of random certificates. Okay, be very clear, because otherwise this can backfire. And one more thing I wanted to mention over here, that if you write any certificate, prepare it thoroughly. Prepare it thoroughly. ठीक है. The certificate courses are not important per se. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो आपके लिए कुछ खराब हो जाएगा. It's not like that. लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो उसको तमीज से फिर प्रिपेयर करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिख रहे हो, कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, वहाँ पर आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो इट विल ऑब्वियसली बैकफायर. ठीक है. एंड इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी कोर्सेज, जस्ट राइट NA ओवर हियर. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो इश्यूज. ठीक है. एंड इफ देन दे आर आस्किंग यू ग्रॉस सैलरी पर मंथ ड्रॉन फ्रॉम प्रीवियस और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर, तो अगर आप का जो करंट एम्प्लॉयर है उसमें आप कितना सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, यू मेंशन इट ओवर हियर. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट यू हैव रिटन ओवर हियर, डू यू वांट एनी काइंड ऑफ इंक्रीमेंट इन द पे स्केल? मेंशन कर रहे हैं तो करिए, अदरवाइज द बेस्ट थिंग इज यू जस्ट राइट NA ओवर हियर. ठीक है, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है, जस्ट राइट NA ओवर देयर. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइज, इन द होल फॉर्म, इन एवरी पेज यू सी रजिस्ट्रेशन नंबर ओवर हियर. तो इफ यू गो टू योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ IBPS, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे रखा होगा, तो यू मेंशन इट ओवर हियर. रजिस्ट्रेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम रोल नंबर. In every page you have to mention about registration number, so be very clear. Okay, so now
in 11th and in 12th, these are very important. See, particulars of prizes, medals, scholarship obtained. This is very critical. Until unless you have won any kind of prize, जब तक आप इसमें कोई अपना आपके पास कोई प्राइज नहीं है, तो डू नॉट मेंशन एनीथिंग ओवर हेयर. ठीक है, इफ यू हैव वन एनी प्राइज, डू मेंशन. अगर नहीं मेंशन, नहीं कुछ जीता है, नहीं कोई मेडल जीता है, नहीं कोई प्राइज जीता है, नहीं कोई स्कॉलरशिप जीता है, तो यहाँ पर NA लिख दो. अपना जो पार्टिसिपेशन है विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से ड्रामेटिक्स, विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, यू नो, ऑल दैट थिंग यू मेंशन इट ओवर हेयर कि आप यहाँ पे खेले, ये ड्रामेटिक्स किया. सम ऑफ यू मस्ट ऑल्सो बी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, तो यू ऑल्सो मेंशन इट ओवर हेयर. which showcase leadership position taken by you during your college. मतलब this is the best, you know, space to showcase your leadership position. ठीक है, best space for showcasing leadership quality. So that's first thing. Now next thing is, then they are asking you knowledge of languages other than English. Be very clear, it's written other than English. हाँ, क्रिकेट के बारे में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो यहाँ पर. यू कैन मेंशन अबाउट पार्टिसिपेशन इन क्रिकेट और प्रोफिशिएंसी इन क्रिकेट, कि अच्छे बॉलर हैं या अच्छे बैट्समैन है, वट एवर. ठीक है, वील सी कि हाउ यू कैन राइट इट इन अ मच मोर प्रोफेशनल लैंग्वेज. ठीक है, वो हम लोग डैफ सेशंस में देख लेंगे, बट आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर आपसे क्या पूछा, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. तो इंग्लिश मत लिखना, डू नॉट राइट इंग्लिश ओवर हेयर, डू नॉट राइट इंग्लिश. इट इज अदर देन इंग्लिश दैट दे आर आस्किंग यू. सो मेंशन हिंदी, मराठी, Assamese, whatever you guys know, can speak, can read, can write. Examination passed, just for example Hindi last examination you have passed, 10th examination, so you can mention it over here. Then comes your work experience. अब देखिए, वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज दिस इज द ओनली एरिया देन ऑन विच दे विल बी आस्किंग यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो दीज थिंग्स आर एनीवेज स्टैटिक. ये तो आपके अगर एम्प्लॉयमेंट है तो यू विल बी राइटिंग इट ओवर हेयर. इफ यू डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट तो यू विल नॉट राइट इट over here. For example, if you are not employed, just write NA in every place. But if you are employed and if you are writing about a particular company, let's say any bank, then obviously the duration you will be writing. Make sure that you guys write over here the content from which you guys think the questions can come. ठीक है, do not writing anything, generic over here. Do not write anything generic. Avoid generic things. Try to write things that basically generate curiosity within the minds of all the board members. This content should generate curiosity. This will help you navigate your overall interview. ठीक है, do not write here anything that makes the chairperson go away and he loses interest in you. So do not write anything generic, should generate curiosity. And then these things are anyways a static thing. Reason for leaving, if you have left any kind of organization, for example, if there is any gap, to mention about civil services, UPSC. If you're mentioning about UPSC, let's say if you have prepared for UPSC and then there is a gap, then always be clear that you will not go to UPSC because let's say you mentioned that it's not your cup of tea, or let's say you have left the plan, because RBI does not want any kind of candidate that wants to leave RBI after few years. It's very clear
that RBI wants long-term people that will commit for the organization for a very long time period. So if you want to mention, fine. If you does not want to mention, that's also fine. सबसे safe रहता है आपका better career opportunities. You can mention about better career opportunities over here, and that will be more than sufficient. Okay? Reason for leaving. Then next, previous attempt for recruitment for post advertised by RBI Services Board. So if you have attempted any previous RBI grade B examination, so you can mention it over here. Okay, dates of examination every year that you have mentioned, and whether selected for final interview, yes or no. तो ये आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है? Then remaining things include whether you have been debarred, obviously no. Are you free from debt depending on your situation? Mention yes or no. If you are under any liability to repay money advanced by any institution or party, depending upon your situation, write yes or no. Okay. Now this is again a very important area which you guys can obviously utilize for your benefit. Try to write hobbies that basically aligns with RBI. नॉट डायरेक्टली बट एटलीस्ट इनडायरेक्टली. जैसे मान लीजिए होता क्या है कि कोई फाइनेंशियल हॉबी भले ही डालना ज़रूरी नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट हॉबीज दैट शोकेस योर इंटरेस्ट इन लेट्स से इकोनॉमी और इंटरेस्ट इन रीडिंग, इंटरेस्ट इन बीइंग अ लीडर. इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड हॉबी. मेडिटेशन इज ऑल्सो अ गुड हॉबी, यू कैन राइट. ठीक है, बट अगर डांसिंग वांसिंग लिखोगे तो nobody will ask question from it. So even though nothing bad is there, but nobody will ask question, then what's the point of writing anything over here? Everything that is you are writing in your DAF, it should generate curiosity in the eyes of the board members so that they ask you questions on that. And these are the areas that you will anyways be preparing. तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा फिर अच्छे से, है ना? तो be very critical with respect to what you are writing. ठीक है, so over here you can mention about hobbies and other aspects if you want. ठीक है, lastly you mention about all those kinds of certificates that you will be attaching over here. For example, 10th, 12th birth certificate, whatever that is required from you, you mention it over here. Do your signature, place, date, and that's all your biodata. Now you can ask me any question that you have with respect to biodata. I'll try to answer it, and then we'll try to focus on how do you need to approach interview preparation. What exactly is the business? So first of all, you have to mention about the business also, ना कि exactly कर क्या रहे हो. तो अगर उस चीज़ में specifically आप बता सकते हो कि you are contributing in this particular area or this particular aspect, then it will be beneficial. Then you can obviously write it. ठीक है, चलिए. So see, interview strategy is very basically simple. You just need to focus on two critical aspects. दो चीज़ों पर आपको focus करना है. The best strategy is to focus on in terms of content preparation. First of all, you have to focus on content preparation, and then you also have to focus on delivery. Because even if you have the knowledge, but if you're not articulating your knowledge in a succinct manner, then there is no point of having acquisition of this much amount of knowledge if you're not able to deliver it. ठीक है? So if you see over here, in terms of academic and issue coverage, so RBI speeches, circular reports, and institutional perspectives, if you see, all those happenings that are coming in January, if you prepare this until the time of your interview, that will be more than enough. Similarly, be very keen on whatever global economic issues that are right now going on, global as well as national economic issues. As all of you are already aware, बहुत सारे multiple issues market में चल रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल रुपी डेप्रिसिएशन, ऑल ऑफ यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर, ठीक है, मार्केट क्रैश, मेटल्स सर्ज, ठीक है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, ट्रम्पोनॉमिक्स, then you also have various kinds of issues, for example FTA, ठीक है। तो इस तरीके के मल्टीपल इकोनॉमिक इश्यूज जो मार्केट में चल रहे हैं, यू गाइस शुड बी वेरी थॉरो, प्रिपेयर थरली, एंड देन सम स्टैटिक क्वेश्चंस आल्सो विद रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल आरबीआई और इंडियन इकोनॉमी का स्वॉट एनालिसिस, इस तरीके के सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो वो सब हम लोग अभी आगे के सेशंस में करेंगे, बट दिस इज द अप्रोच दैट यू गाइस शुड ऑलवेज टेक टू प्रिपेयर ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है तो जितने भी न्यूज में इश्यूज चल रहे हैं उसको प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और फिर आपको अपना पर्सनल भी प्रिपेयर करना है, एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर, सर्टिफिकेट्स इफ यू हैव मेंशन्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर अलाइनमेंट। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आरबीआई and why should they take you? Why should the India, or let's say why should the Reserve Bank of India Services Board, why should they take you? You should be able to sell yourself. ठीक है, तो with respect to all these things, it's very critical कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, अपने ये सारे चीजें उनको पकड़ाएं और उनसे क्वेश्चंस जनरेट करवा लीजिए। उन सारे क्वेश्चंस पर आंसर अपने आप खुद बनाइए, मेक आंसर्स ऑन योर ओन, ठीक है। डू नॉट टेक चैट जीपीटी और एनीबडीज आंसर, यूज चैट जीपीटी और एनी अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर जनरेटिंग क्वेश्चंस ऑन योर एक्सपीरियंस एंड यू नो ऑल दोस काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड, बट इट इज वेरी क्रिटिकल दैट आंसर्स शुड बी योर ओन। अगर आप रटे रटाए आंसर लेके जाएंगे, इट विल बी वेरी मच डेट्रीमेंटल, आई एम टेलिंग यू, तो वो दिक्कत रहेगी आपको, ठीक है। तो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट आंसर्स शुड बी ओरिजिनल, ओके। एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ इशू, आप कोई भी इशू अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज टू यू नो राइट अबाउट दैट इशू, फॉर एग्जाम्पल रुपी डेप्रिसिएशन, एंड राइट अबाउट इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू बिजनेस लाइन, and whatever articles related to rupee depreciation that has come, read all of them, and that will be able to build your overall understanding of that particular issue. मतलब इससे बढ़िया तरीका कुछ हो नहीं सकता, and I am telling it on the basis of the experience that I have got from civil services in interview preparation. सबसे बेस्ट तरीका है ये किसी भी इशू प्रिपेयर करने का, तो you do it accordingly, ठीक है। Now, if you have any question, feel free to ask. Otherwise, I'll wind up this session. ठीक है, and फिर upcoming sessions will be there as per mentioned in the brochure. आप लोग ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये सारे चैनल में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा रखी है। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस।